वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फेज मॉड्यूलेशन उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। देन वी टेक द कंपैरिजन बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो थर्ड टाइप का जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है दैट इज़ एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन का, वो है आपका फेज मॉड्यूलेशन। इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड एज अ पीएम। फर्स्ट विल सी द डेफिनेशन व्हाट इज मीन बाय पीएम एंड देन विल सी द वेवफॉर्म्स ऑफ फेज मॉड्यूलेशन। सो फर्स्ट पॉइंट इज द फेज मॉड्यूलेशन इज़ वेरी सिमिलर टू द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का स्टडी किया था, in which the frequency of carrier is changed in accordance with the modulation of the original information signal. So that is the frequency modulation. So in phase modulation it is similar to that of your frequency modulation, but the only difference is that the phase of the carrier is changed instead of varying the frequency. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी वेरी हो रहा था, ठीक है, बट इन केस ऑफ फेज मॉड्यूलेशन द फेज ऑफ द कैरियर इज चेंज इन अकॉर्डेंस विद द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि देर आर थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द साइन वेव। फर्स्ट वन इज द योर एम्पलीट्यूड, देन frequency and the phase. So in phase modulation the phase of the carrier will be changed, so that's why it is a phase modulation. The amplitude of the carrier remains the constant. So in this case the amplitude will be constant in case of phase modulation, but only the phase and the frequency will be vary in the phase modulation. Then we'll see the waveform. When the modulating signal goes negative, the phase shifts becomes leading, and this causes the carrier to be effectively compressed. The effect of this is if the carrier frequency is increased, means according to the original information signal, the phase of the carrier will be leading or lagging, but in case of negative peak the phase becomes the leading and it causes the carrier to be compressed, means its frequency will be high. In this case means it is clear that the frequency and the phase of the carrier will be changed in case of phase modulation, and in case of positive peak the amount of phase lag increases and the amplitude of modulating signal will be a constant. So in that case the frequency is stretch out, means reduce. So that is for the positive peak of the original information signal. So in this way the phase modulation will be processed. Then we'll see the waveform so that this point is clear to you. So first is the input, means original modulating or baseband signal or the information signal. Okay, so that is the modulating voltage. It is denoted by x of t, means it is the input signal, and that is the analog signal because we study the analog to analog conversion. So this is the analog signal. It can vary with the plus em up to the minus em in both the way, means it consists of positive as well as negative peak. So that is the input signal or baseband signal. Second, you can draw the carrier signal here. You can draw the carrier signal like that. It is a high frequency signal, that is nothing but the carrier signal. So you can show here. Third waveform is the phase modulated signal, that is a PM output or phase modulated signal. So in phase modulated signal the phase and the frequency is vary in accordance with the original modulating signal. So see here, first the original baseband signal will be a
0. So at that time the carrier has no change. The phase and the frequency and the amplitude will be constant in PM signal. When the input signal becomes a constant, means 0, after that the input signal start increasing towards the positive peak, that is plus EM. So at that time, see here, I will show by the yellow mark. So at that time the phase will be shifted, means carrier will be stretch, means phase will be a lag. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फेज लैग होगा एंड द कैरियर विल बी अ स्ट्रेच आउट, मीन्स इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम लो. ओके, टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. सो दैट्स वाई इट हैज़ अ carrier stretching and the phase is lag whenever the your input signal goes to the positive peak, towards the positive peak, that is plus EM, means maximum value. Then when it crosses the 0, at that time again the phase will be changed in accordance with the previous one. So this will be a in negative direction, so the phase will be changed from positive to the negative. It will start from this peak and the carrier is compressed, means phase will be a leading one phase, means its frequency will be very high as the time period will be less. So that is compressed, means frequency and phase both are vary. So the your information signal is contained in the frequency and the phase variation. So that is the phase modulation PM. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं वेवफॉर्म. तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो है इनपुट सिग्नल जो है या बेसबैंड सिग्नल, इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, 0 वैल्यू है. सो एट दैट टाइम देर इज नो फ्रीक्वेंसी एंड फेज चेंज एंड एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो कांस्टेंट. तो इट इज शोन बाय अ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर. ठीक है, so there is no change in the phase and frequency and the amplitude. After that जब आपका बेसबैंड सिग्नल्स इंक्रीज होगा टुवर्ड द प्लस EM, so at that time there is again no change. ठीक है, तो यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा. when it reaches to the plus EM, that is maximum value, at that time द फेज इज चेंज. यहाँ पे पॉजिटिव फेज था. ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रीन लाइन से मार्क कर रहा हूँ. आफ्टर दैट द फेज विल बी चेंज व्हेन इट रीचेस टू द प्लस EM. ठीक है, रेड लाइन से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं. तो फेज यहाँ पे चेंज हो गया, मीन्स फ्रॉम दिस पॉजिटिव देन दिस स्टार्ट विद द निगेटिव. सो 90 डिग्री फेज शिफ्ट इज देयर. ठीक है, तो जैसे ये पॉजिटिव साइड इंक्रीज हुआ आपका इनपुट वेवफॉर्म, फेज इज पॉजिटिव. ओके, एंड आफ्टर इट रीचेस टू द प्लस EM, आफ्टर दैट व्हेन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, जैसे ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टूवर्ड द 0, द फेज इज शिफ्ट. प्लस से यहाँ पे माइनस में शिफ्ट हुआ, मीन्स 90 डिग्री फेज शिफ्ट है. अगेन व्हेन इट गोज टू द 0, ओके, or it reaches to the 0, again the phase will be changed, this from minus to plus. ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, अगेन शिफ्ट हो गया है माइनस टू प्लस एंड कैरियर इज कॉम्प्रेस, सो दैट इज फेज लीडिंग. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस था, देन यहाँ पे शिफ्ट हो गया प्लस, इज देयर अगेन अ 90 डिग्री फेज शिफ्ट इज देयर. इन सेम वे further modulation will be happen. Okay, so that is the phase modulation.
Then we'll see the PM generation, phase modulation generation, means how we generate the PM wave. ओके तो यहाँ पे फिगर दिया है, तो इसमें दो मेन ब्लॉक्स है. फर्स्ट इज डिफरेंशिएटर, सेकंड इज VCO. VCO इज नथिंग बट द वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर इज देयर. ठीक है, तो इनपुट में एनालॉग सिग्नल रहेगा जिसको हमें फेज मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करना है. सो दैट इज अ साइन वेव. So that is a modulating signal. It is denoted by x of t, which is applied to the differentiator. Differentiator क्या करेगा, उसे differentiate करेगा dx of t with respect to time dt. The output of this differentiator is given to the voltage control oscillator. The voltage control oscillator will generate the phase modulated output. Means it will change the phase and the frequency of the carrier with respect to this original modulating signal x of t, and we'll get at the output PM output, that is the phase modulation output. So that is the generation of PM wave at the transmitter side or at the transmitter. Another waveform for the phase modulation is given here, which are same as we are seeing. So that is the carrier, that is EC signal. This is the original baseband signal, means input signal, and third one is the PM output, phase modulated output. So in that you can clearly see in the phase is lead and the phase is lag, and the carrier will be stretch and the carrier will be a compress. Okay, so this is the phase modulation, means according to this baseband signal the phase and the carrier's frequency will be changed in accordance with this baseband signal. So it will be clearly seen over here. Okay, so at first when signal start increasing, input signal start increasing, at that time the phase will be a start from 0. When it goes to the plus EM, the phase will be shift from negative to the positive in this way. So it will be start from 0, then it will start from the negative direction, so there is a 90-degree phase shift. Again it will change from this maximum value to the minimum value. Again it will compress the frequency. Okay, so in this way phase modulation will be done. Then we'll see the some advantages and disadvantages of phase modulation. First we'll see the advantages of phase modulation. First is phase modulation PM is a simple concentrated to the frequency modulation. Means your phase modulation is simply similar to your frequency modulation. Okay, means phase modulation में frequency भी vary होगा with respect to the phase of the carrier. Okay, so that is the one of the advantages of the phase modulation. Second, it is used to find out the velocity of target by removing Doppler data. Means it is used in the radar system also. Third advantage, the main benefits of this modulation is signal modulates because it permits the computer for communicating on high speed using the telephone system. And next one, when the information is being transmitted without instruction, then the speed rate can be observed. And the main advantage is, one of the more advantage of PM is improve immunity towards the noise. तो नॉइस इम्यूनिटी जो है फेज मॉड्यूलेशन में वो सबसे ज़्यादा है, बिकॉज द डेटा और द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर बाय चेंजिंग द फेज एंड द फ्रीक्वेंसी of the carrier. That's why noise immunity will be very high in case of phase modulation as compared to the AM and FM. Then we'll see the disadvantages. First disadvantage is phase modulation needs two signal.
by phase variation among them. Therefore both the two patterns are required like reference as well as signal. ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस सिग्नल भी लगेगा एंड इनपुट सिग्नल, तो दो इनपुट सिग्नल्स को वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा. सो दैट्स वाई दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ phase modulation. Second, complexity. So phase modulation requires the hardware which is the complex in nature, so its conversion is also difficult. So this is the one of the disadvantage of phase modulation. So these are the some of the main advantages and disadvantages of phase modulation. ठीक है, तो अगर इस पे क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द फेज मॉड्यूलेशन, सो इन दैट first you have to write the definition of phase modulation, then draw the waveforms of phase modulation. In that you will show first baseband signal or the modulated signal or the original information signal, then we will show the carrier, and third one is the phase modulated signal, and after that you give the advantages and disadvantages. Also you write the phase generation, means phase modulation generation, how it can be generated. ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, तो ये सब कंटेंट्स उसमें होना चाहिए. देन विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ phase modulation. So first is the modulation very useful in radio waves transmission, and it is essential element in several digital transmission coding technique. So your phase modulation is generally used in radio wave transmission. So that is the first application. Second, the phase modulation is widely used for transmitting radio waves, an integral element of many digital transmission coding scheme that supports the ample range of wireless technologies such as GSM and satellite television and Wi-Fi. तो satellite televisions and wireless technologies such as GSM and Wi-Fi में जो भी data transfer होता है that uses the phase modulation. Okay, so these are the main two applications of the phase modulation. Next topic is comparison between AM, PM and FM. ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले कंपैरिजन के लिए कुछ पॉइंट्स लेंगे, मीन्स फीचर्स. सो ऑन दैट फीचर्स वी कंपेयर द AM, FM एंड PM. सो फर्स्ट इज द फंक्शन, मीन्स डेफिनेशन. सो इन AM, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव वेरीज एज पर द एम्पलीट्यूड और द वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एज अ इनपुट. ठीक है, तो AM में क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर विल बी वेरी इन अकॉर्डेंस विद द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल. सो दैट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड एज AM. इन केस ऑफ FM, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव वेरीज एज पर द ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल which is the input signal, so that is called as the FM. And third one is the PM. So in case of phase of the carrier, it change as compared to the or with respect to the original modulating signal or the baseband signal, so that is called as the phase modulation. So first point is regarding the functions. Second will be the carrier parameter. So in case of AM, frequency of carrier is kept constant. ठीक है, मीन्स इसमें AM में क्या होगा, frequency is constant, only the amplitude of the carrier will be changed. So in case of frequency modulation, amplitude of the carrier is constant but the frequency will be changed. So in case of phase modulation, the amplitude of carrier wave is constant and the phase and frequency will be vary. So that is the second point for the comparison. Third, types where it is used. So AM types include the SSB, VSB, and in case of FM, it is digital FM types include FSA, means frequency shift keying. Okay, and in case of phase modulation, digital PM types include the BPSK, binary phase shift keying, QPSK, QAM, quadrature amplitude modulation. Okay, so these are the
टाइप। तो इसमें आप वेवफॉर्म्स भी निकाल सकते हो, फोर्थ पॉइंट आप उसमें ले सकते हो, दैट इज़ अ वेवफॉर्म्स फॉर AM, FM एंड PM। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन वेयर AM इज़ यूज, FM इज़ यूज एंड PM इज़ यूज। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो AM, FM एंड PM को। सो दैट विल एंड द एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक्स। ठीक है, तो इसमें हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन का डिटेल स्टडी किया है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डेटा ट्रांसमिशन का डिटेल स्टडी करेंगे। सो इन दैट विल सी द सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। सो थैंक यू।